हम आ चुके हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। श्री गणेश के आशीर्वाद से चलते हैं 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अगले 8 मिनट के लिए अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ फॉर अ रोड ट्रिप टू द क्लाउड्स ऑफ हिमालयास। अब हम जा रहे हैं दार्जिलिंग से गंगटोक, जो कि करीब 100 किलोमीटर्स है। आप सिलीगुड़ी से डायरेक्ट गंगटोक जा सकते हो, वहाँ से भी आपको अराउंड 100 किलोमीटर्स ही पड़ेगा। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ सिक्किम, जो कि आपको साउथ सिक्किम के रंगपो टाउन में मिलेगा। सो गाइस, वेलकम टू द सिक्किम। सो ऑन फर्स्ट डे ऑफ आवर गंगटोक ट्रिप, वी आर एट द मोस्ट फेमस एमजी मार्ग। एमजी मार्ग के पास से ही छोटा सा रास्ता एक लाल बाज़ार की ओर भी जाता है, जहाँ पर आप ठीक ठाक प्राइस पे शॉपिंग कर सकते हो। इफ़ यू आर अ फूड लवर देन एमजी मार्ग इज़ द हेवन फॉर यू। देयर आर सो मैनी सिक्किमिस cuisines here to try it out. You could try the Sikkimese thali at the Nimto, the Nepali thali at the Hamro Bhansagar restaurant. All the branded shops are there on MG Marg to do shopping. यहाँ आपको हर ब्रांड के चखने से लेकर दारू तक सब कुछ मिलेगा। If you are a vegetarian, then definitely you have to struggle a little bit to find a good food. So finally, on last day at Gangtok, I found out a veg North Indian restaurant, the Rasoi. The taste of the food was really amazing. Best time to visit MG Marg is at night. The lights are really amazing. यह गंगटोक का मोमोज का सबसे फेमस रेस्टोरेंट द सफल मोमोज। यहाँ आपको वेज मोमोज भी मिल जाएंगे और नॉन वेज की तो यहाँ कोई कमी ही नहीं है। Since I am a chicken mutton limited non-vegetarian, so first time here I ordered the pork momos, but I was not able to eat them. So on my next day, I went to the Ganesh temple of Gangtok, that is the Ganesh Tok. So here we are at Ganesh Tok. The view from Ganesh Tok is good. If you wanna see some good view of Kanchenjunga from Gangtok, so you could visit the Tashi viewpoint also. So on another day, I left to the East Sikkim with some of my other solo travelers at my hostel Tagalong Backpackers. East Sikkim is a complete one-day tour, जिसमें आपका खर्चा करीब 1,000 से 1,500 ट्रैवलिंग का आ जाएगा। So we are going to Nathula at 15,000 feet, और रास्ते में आपको कई सारे कंचनजंगा व्यूज़ तो मिल ही जाएंगे। Since I went here in mid-November, but in the last December and January, you will be able to see a lot of snowfall in this region. So finally we reached the Nathula Pass, the Indo-China border. अगर आप एयरटेल यूज़र हैं तो यहाँ आपको इंडिया के नेटवर्क मिले या ना मिले, बट चाइना के डेफिनेटली मिल जाएंगे। I also got the message, welcome to China. So I virtually reached the China. At Nathula, the cameras are not allowed at actual border line of India and China. So here are all of my new friends from different parts of India. One is from Mumbai, one is from Vizag, and one is from Goa. Nathula Pass is closed on Monday and Tuesday, so tourists would be able to visit here only on other remaining 5 days. And in the late December and the January also, due to the high snowfall, the way to Nathula Pass is closed most of the time. Most of the tour plans में ओल्ड हरभजन सिंह टेम्पल इंक्लूड नहीं होता, जिसके लिए ड्राइवर आपको अलग से 300 to 400 रुपीज़ चार्ज कर सकता है। So next we are going to old Harbhajan Singh temple, or on the way we got other viewpoints also. So
So this is the Elephant Lake, also known as the Kopop Lake. This is in the shape of elephant. अगर हमारे पास ड्रोन होता तो ऊपर से आपको एग्जैक्ट शेप दिखा देते. One day bike trip to East Sikkim is also a very good alternative. इसके लिए आप बाइक गैंगटॉक से रेंट पर ले सकते हो और परमिट की व्यवस्था भी आपका ट्रैवल एजेंट खुद ही कर देगा विद सम एक्स्ट्रा चार्जेस. गैंगटॉक में बाइक की कॉस्ट आपको अराउंड 1000 to 2000 पड़ेगी फॉर वन डे और परमिट का कॉस्ट आपको अराउंड 500 to 1000 पड़ेगा. नाउ वी आर एट ओल्ड बाबा हरभजन सिंह टेम्पल in the memories of Baba Harbhajan Singh, who was a Indian Army soldier. Finally, now we are above the clouds, and this is the old Silk Route which was used in the ancient time for the trade between China and India. If you are coming with your own vehicle, then you could visit the Zuluk and the Nathang Valley, that zigzag way. But then you need 2 days. You have to stay at Zuluk for one night. So now we are going down to our next destination, that is the Somgo Lake, also known as the Changu Lake. किसी ने ये बात सही ही कही है जनाब कि असली मज़ा मंजिल का नहीं रास्तों का है. So we are ready to enter the clouds of Himalayas. They are coming in our way. So he is Kedar Patel, the Marathi from Maharashtra. I met him on my first day at Gangtok at our hostel Tagalong Backpackers. So that's why if you are traveling solo, you should stay in hostels instead of hotels, because there you will find some other crazy solo travelers like you. And the hostels like Tagalong Backpackers are there to make this relation more wonderful. Finally, we are at Changu Lake, and here is the entry of yaks in our story. Changu Lake नाथुला जाने से पहले ही पड़ती है, बट इसका स्टॉप इन रिटर्न होता है इन मोस्ट ऑफ द टूर प्लान्स. चंगू लेक का एल्टीट्यूड करीब 13,000 फीट है. The girl besides me in a cute white cap is Sanyukta. She is from Vizag, Andhra. I was so excited at this point of time. I said them also to shout, but they couldn't. This was one of the special moments in my whole Sikkim trip. I know guys that East Sikkim is very beautiful, but the actual beauty of Sikkim is in North Sikkim. इसीलिए पहले ईस्ट सिक्किम देख लो, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम के बाद ईस्ट सिक्किम में वो मज़ा कहाँ. That girl on yak with cute curly hairs is Snigdha from Goa. So at last I was struggling just to capture me and yak in a single frame. Hello everyone, I hope you enjoyed this road trip to the clouds of Himalayas, and this video will motivate you to travel solo and meet some amazing strangers around the world. So like our video, since I am a new travel blogger, so your suggestions are really important to me. Just comment down all your suggestions for all our upcoming vlogs. Subscribe to our channel Traveling Mind, because next we are going to the heaven of Sikkim, that is the North Sikkim, a complete 3 days bike trip.